Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners, today we will discuss very important concepts regarding the computation of future values. In last lecture, we have seen the computation of future value of a single amount, but in this lecture, we will compute future value of mixed term, future value of ordinary annuity, as well as future value of annuity due. Let's start our first computation. That's the future computation of future value of a mixed term. Okay, इस एग्जांपल में हम दो चीजों को देखते हैं कि नंबर वन, हमारे पास जो कैश फ्लोज का पैटर्न है, जो हर साल डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है। अच्छा, इस एग्जांपल में जो अभी हमने नीचे यहाँ पे लिखी है एक साइड पे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो टाइमलाइन है, इस चीज को हम कहते हैं टाइमलाइन। और टाइमलाइन के ऊपर हमने कैश फ्लोज को डिपिक्ट किया हुआ है और नीचे हमने जो ईयर्स हैं उनको जो है वो शो किया हुआ है। अच्छा, इस सिचुएशन में हम जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमने जो डायरेक्शन ऑफ कैश फ्लोज की जो फ्यूचर वैल्यूज की कंप्यूटेशन है वो अप फ्रंट रखी है टुवर्ड्स द स्केल ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स। हम पहले साल पे खड़े हैं तो 4 सालों बाद जो है वो 5वें साल तक हम पहुंचेंगे। फिर अगर सेकंड स्टेज पे हम खड़े हैं, सेकंड ईयर के एंड पे खड़े हैं, तो उसके बाद 3 सालों के बाद हम 5वें स्टेज पे पहुंचेंगे। फिर इसी तरह से थर्ड पे खड़े हैं तो 2 साल, फिर चौथे पे खड़े हैं तो 2 साल, 3 पे खड़े हैं तो 2 साल, चौथे पे खड़े हैं तो 1 साल, और 5वें पे खड़े हैं तो हमारे पास उस टाइम उसकी क्योंकि टाइम नहीं गुजरा तो वही फ्यूचर वैल्यू होगी। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हमारे पास हर साल जो है वो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। मिस्टर हाशिर डिपॉजिट करवा रहे हैं 10,000 इन फर्स्ट ईयर, 20,000 इन नेक्स्ट ईयर, 25,000 इन थर्ड ईयर, एंड 35,000 इन फोर्थ ईयर, एंड 45,000 इन फिफ्थ ईयर। ये डिफरेंट जो कैश फ्लोज का पैटर्न है, इसको हम कहते हैं मिक्स स्ट्रीम। और अगर मिक्स स्ट्रीम की हमने जो है वो कंप्यूटेशन करनी हो फ्यूचर वैल्यू की, तो हमें हर साल के लिए वही जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं सिंगल वैल्यू के लिए, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट्स सी, वी स्टार्ट आवर कंप्यूटेशन। अच्छा, अब इसमें एन का जो तयन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया है, दैट वी विल हैव टू डिटरमिन द टाइम पीरियड दैट इज टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, कि रिमेनिंग पीरियड जो है वो हमारे पास कितना और किस स्टेज पे हम खड़े हैं। अगर हम पहले साल पे खड़े हैं तो हमें 4 इयर्स के बाद फ्यूचर की वैल्यू को देखना है। अगर हम सेकंड पे खड़े हैं तो 3 सालों बाद हमने जो है वो फ्यूचर वैल्यू को देखना है। अगर हम थर्ड पे खड़े हैं तो 2 सालों के बाद हमने 5वें साल तक पहुंचने के लिए वैल्यू को देखना है। अगर हम जो है वो फोर्थ ईयर पे खड़े हैं तो 1 साल रहता है 5 साल होने में, और इसी तरह से जब हम 5वें साल पे खड़े हैं तो 0 पीरियड पीछे रह जाता है कि जिसपे जो है वो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। सो कैश फ्लोज आर डिपिक्टेड इज, फर्स्ट कैश फ्लोज इज 10,000, second cash flow is 20,000, third cash flow is 25,000, and fourth cash flow is 35,000, and 45,000 is the fifth cash flow. So these are the different cash flows, different stream of the cash flows. We compute. As we know that future value is equal to present value multiplied 1 plus I 4 power n. So in first computation is equal to, we have to compute future value cash flows, each cash flow for each time period, multiplied future value interest factor for given interest rate for given number of periods. Let we first compute future value interest factors. हम इनको टेबल की मदद से भी देख सकते हैं, लेकिन इन सिंपल एक्सेल हम इसको मॉडल भी कर सकते हैं। इन आवर मॉडलिंग इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज 15%, एंड फॉर जो पावर है उसको हम जो एन के कॉलम से, और यहां हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देंगे, ईयर्स विल रोटेट ईच पीरियड। सो आवर फर्स्ट इंटरेस्ट फैक्टर इज 1.75। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास बाकी ईयर्स का भी 1.52, 1.32, 1.15 एंड
1 is there. So future value is equal to cash flows and multiplied future value interest factor. That is equal to J6 multiplied future value interest factor. That is the first computation. Let it complete here. This is all the future values computations. So let we have a sum of these cash flows. We will go towards auto sum, and let we have the sum of our cash flows, that is 1,35,000. अगर देखा जाए तो मिस्टर हाशिर ने 1,35,000 रुपया जो है वो ओवर 5 years जो है वो डिपॉजिट करवाया है, और उसे जो बैंक है वो 1,66,220 रुपए उसे जो है वो अवार्ड कर रहा है. तो इट मीन्स अपॉन 15%. अब अगर हम देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट इज द डिफरेंट interest rate is the difference between your future values is equal to minus your sum of cash flows, 31,220. This one is the sum. Let we put here in our symbols. Let's summation here, summation of future values. And here we put again this symbol of sum and cash flows. So in first instance, we have computed the future value of the mixer team. Now we are interested to compute the future value of an annuity. First of all, let we define the term annuity. Equal series of cash flows is called annuity. And if the cash flows occur at the end of each year, it is called ordinary annuity. And if cash flows occur at the beginning of each year, it is called annuity due. अब हम इस चीज को देखते हैं कि अगर मिस्टर जैद जो है वो हर साल 10,000 रुपया जमा करवा रहा है 5 सालों के लिए, अगर उसके कैश फ्लोज के पैटर्न को ऑर्डिनरी एन्युटी के मुताबिक ट्रीट किया जाए तो हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. अब देखा जाए तो 10,000 at the end of first year, at the end of second year, at the end of third year, at the end of fourth year and at the end of fifth year. हर साल मिस्टर जैद जो है वो 10,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा रहा है और बैंक उसे ऑफर कर रहा है 15% इंटरेस्ट रेट जो है वो पर एनम ऑफर कर रहा है. We know that future value of an ordinary annuity is equal to cash flows multiplied 1 plus I per n minus 1 divided by interest rate. अगर हम इसको कंप्यूट करें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू, हम इस तरह से भी नरेट कर सकते हैं, कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी फॉर गिवन इंटरेस्ट रेट फॉर गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स. सो इज इक्वल टू, let we compute future value is equal to, we have let's first write the cash flows. Cash flows are equal to 10,000 occurring at the end of each year, and the interest rate is, let's write I, interest rate is 15%, 0.15 per annum, and the number of cash flows that are for 5 years consecutively, there are
cash flows that are occurring at the end of each 5 years. Now, future value of an ordinary annuity is equal to our cash flows multiplied 1 plus I 1 plus 15% whole power is and 5, let it 1, 2, 3, and 4. First function and second function has been closed. Minus 1, 10 divided by 0.15, and it is closed. 67,424 is our future value of an ordinary annuity. अगर मिस्टर जैद 5 सालों के ऊपर 50,000 रुपया जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, बट आफ्टर compounding process for 5 years, his total future value comes, if the cash flows are to be considered at the end of each year, then the value is 67,424. So the interest amount he gained here and 10,000 cash flows for 5 years is equal to 50,000. Total cash flows are equal to 10,000 multiplied 5. It is 50,000. So total cash flows minus future value is equal to future value of an ordinary annuity minus total cash flows, that is the interest amount, 17,424. So it is called future value of ordinary annuity. And in the same pattern, let's come up towards the computation of the future value of an ordinary annuity. अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी में क्या डिफरेंस है कि इसमें क्योंकि जो पहला कैश फ्लो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, टाइम 0 पे स्टार्ट हो रहा है, तो एक कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वो किस तरह से, दैट विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी इज इक्वल टू, लेट इट more proper manner, future value of an annuity due, future value of an annuity due is equal to, if we say that if we have computed this element, already we have computed this element, but once again we write here the future value is equal to future value multiplied 1 plus I. It is 77,535. So in future value of an annuity due, the total amount that he will get, that is 77,537. Whereas जबकि वो future value of ordinary annuity में 67,424 जो है वो गेन कर रहा है. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ
एक जो एलिमेंट है 15% का, वो जो है वो गेन कर रहा है। अगेन इट इज okay, 77,537. So the difference at the interest amount he gains here that is the difference between is equal to that is equal to future value of an annuity due minus the total of the cash flows. That is 27,537. So there is a huge difference between future value of an ordinary annuity and the future value of an annuity due. So it's the complete competition that we have learned today. Thank you so much for listening.